the original logo, Willys. These used to be the side profile of the car. Hi all, welcome back to my channel, The Classical Motorhead. So, I'm in राजस्थान राइट नाउ, जयपुर. अब जयपुर में क्या है कि यहाँ पे जीप्स का एक अच्छा सा कल्चर है. तो इसी के साथ मुझे एक जीप और दी ओरिजिनल जीप दी विलीज, राइट माय फ्रेंड्स, दी विलीज, इसका एक मुझे बहुत रेयर मॉडल मिला है. आई लाइक टू शो यू ऑल जीप, द ओरिजिनल जीप. John Knott Willys bought the Overland Automotive Division of Standard Wheel Company in 1908 and in 1912 named it the Willys Overland Motor Company. Then, during 1940, the time of World War II, the US Army wanted Army specified light vehicles, or Jeeps. Out of almost 135 companies, three were selected, that were Willys, Ford, and Bantam. A collective production happened. Thus, Jeep name was born. More and more vehicles were produced year after year, enhancing features and comfort. Then in 1945, the first civilian Jeep was introduced, the CJ2A. From there, the name CJ established. It meant civilian Jeep, as during those days farmers did not had any tractors or trucks. Thus, Willie decided to market their Jeeps as a product, and it was known as an all-around farm workhorse, which was indestructible and reliable. Then in 1949, CJ3A was introduced in the market. It was considered as father of recreation vehicles. CJ3A. But before telling you all the specification features of this car, I would like to tell you all that post 1947, I mean independence के आसपास, Mahindra had acquired license to manufacture Jeep in India. But मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद भी महिंद्रा के पास ये लाइसेंस या ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने नाम पे जीप्स को इंडिया में बेच सके. तो इसलिए विलीज के कुछ प्रोडक्ट्स लाइक विलीज एमबी, CJ3A, CJ3B महिंद्रा मैन्युफैक्चर करती थी, बट दे वर सोल्ड इन द नेम ऑफ विलीज. एंड उसके बाद जब महिंद्रा मेजर लॉन्च हुई थी, दैट वाज हेवनली बेस्ड ऑन द CJ5B. नाउ मूविंग टू द जीप. दी 7 स्लेट ग्रिल जो जीप आज भी यूज करती है एंड महिंद्रा ऑल्सो यूजेस, दैट इज हेवनली इंस्पायर्ड. नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, जो ये टायर्स हैं ये एम्प्टी टायर्स हैं, मड टेरेन टायर्स, एंड आई थिंक दीज आर द ओरिजिनल वंस. ये विलीज का लोगो है एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंड और समथिंग जो राइफल उस टाइम पे यूज़ करते थे, वो यूज़ रखने के लिए होता था, और लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट. दिस इज अ CJ बैजिंग, CJ3A. नाउ कमिंग टू द इंटीरियर्स. सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल जिसमें आपको एक कंप्लीट विंडशील्ड मिलती थी. इससे पहले में द विंडशील्ड वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कैन सी एक स्ट्रैप है, ये एक स्टेपनी माउंट करने के लिए यूज होता था. As I told at that time, the bumper or the metal sheet was very heavy, rugged. Bonnet openers. Now coming to the steering. Steering एक manual था, so you needed your muscles to move around. And side view mirror. It used to be round. Coming to the pedals, brake, accelerator, clutch, gear lever.
एंड मीटर गॉजेस जो थे वो सारे मैनुअल होते थे, टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, एवरीथिंग मैनुअल. सीट्स कंफर्ट बहुत तो नहीं था, बट एट दैट टाइम इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम कार. कमिंग टू द रेयर, यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग है, विलीज लोगो, एंड इट्स अ लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल. थोड़ा रस्ट हो रखी है गाड़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी, बट एज आई सेड ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलती है. एंड दिस इज द पेट्रोल टैंक, ऑलमोस्ट अ 40 लीटर टैंक. Talking about the suspension, the suspension were hard, and it was known as T90. It was developed by Borg Warner, and Dana 18 transfer case was used. A Dana 24 front axle and Dana 41 and Dana 41 or 44 in the rear axle were used. Talking about under the hood power, CJ3A जो है वो आपकी अराउंड 60 bhp प्रोड्यूस करती है विद 140 Nm न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड इट वाज अ 4 cylinder engine known as the Go Devil. So as I said, ये एक revolutionary product था, and it was known as the father of recreation vehicle. ये गाड़ी अपने में एक अलग ही बात थी, and as I said in my channel the classical motorhead, आपको ऐसी गाड़ियाँ मिलती रहेंगी. तो ये गाड़ी कुछ और जीप ये एक ऐसी एंगल देती है. आजकल जो गाड़ियाँ जैसे रैंगलर हो गई और थार रॉक्स, ये इसी के बेस में, एंड दे कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ दिस जीप. और आज के टाइम जब ये चलती है तो लोग एक्चुअली मुड़ मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को. सो आई होप ये एक ऐसे रेयर जेम्स हैं जो हमें आज के टाइम यूजली मिलते नहीं हैं. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा. दिस वॉज अ क्विक शॉट. ये मुझे लगा, सो आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द क्लासिकल मोटरहेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.